So texture of igneous rock, texture is mutual relation among grains in a igneous rock. So the grains of the rock, they are defined different way. The relation are also defined in different way. So grain ro tomorrow size, shape, ए सब thing अनुसारे define करा जाए. So the igneous texture that is studied under these headings, crystallinity, granularity, crystallinity, granularity, then shape, then fabric. So crystallinity, granularity, shape and fabric. So पास है क्या crystallinity. So what is crystallinity? It is defined as the crystallinity, it is defined as degree of crystallized grain within an igneous rock. गोटे igneous rock रे केते crystallized grain अछि ताकू नै कि हम कहंती degree of crystallinity. So ता अनुसारे we can define the texture into three types. On the holocrystalline, hemicrystalline, holohyaline. If a rock consists of completely crystallized grain, बा completely crystallized grain देख जो दिन rock तैयारी हितबो ताले ताकू कहजिबा holocrystalline. तो suppose गोटे rock अछि जोथरे कि तुमे crystallized grain सब पाउछ, इनसु crystallized grain सब पाउछ, ताले it will be called as holocrystalline. The texture will be called as holocrystalline. So holocrystalline rock consists of all crystallized grain. Rock consists of all crystallized grain, that is will be called as holocrystalline. यदि tomorrow rock consists of partially crystallized grain and partially glassy. So the partially crystallized grain थी partially glassy matter थी ताको कहजिबा hemicrystalline. So if consists of partially glassy matter, partially crystallized grain, then it is called as your hemicrystalline. If it consists of completely glassy matter, लेकिन नो ग्रेन्स आटो तुम्हें कहि परबो किछि भी ग्रेन न थाए ताको कहंती hollohyaline. यदि सब जगह ग्रेन थिबो ताले holocrystalline, all crystallized grain. यदि partly crystallized grain थाउची, partly glassy matter थाउची, ताले it will be hemicrystalline. If it consists of completely glassy matter, it will be hollohyaline. So these are three types of texture on the basis of crystallinity. जोटा कि indicate करछि the degree of crystallized grain within an igneous rock. तापरे तुम्हारा आछो granularity. So granularity indicate करे size of grain.
तो कौ साइज रो ग्रेन अछन सब इग्नियस रॉक रे डिफरेंट साइज हो शेप रो ग्रेन तुम पाइबो तो साइज अनुसार आम डिफाइन करबा ताले तो इग्नियस रॉक और टेक्सचर कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स दीटा ब्रॉडली तुम डिवाइड कर परिबो गोटे होची phaneric टेक्सचर आ गोटे aphanitic टेक्सचर गुरुजी phaneric टेक्सचर आ गोटे aphanitic टेक्सचर सो phaneric टेक्सचर कोटा हम कहबा मोटी मोर ग्रेन कैन बी seen with naked eye or with the help of a pocket lens. सो आम खाली अखिरे ग्रेन पूरा देख पाता गोटे इग्नियस रॉक रे यदि खाली अखिरे आम ग्रेन देखि पाउछन ताले इट विल बी कॉल्ड एज phaneric खाली अखिरे देखो नले विथ द हेल्प ऑफ ए पॉकेट लेंस यार जूम होची 10x जूम थिबो केते 10x जूम पॉकेट लेंस का 10x पर्यंत से जूम करी दम देखि पे जदि सेठी तुमे देखि पारलो ताले इट विल बी कॉल्ड एज phaneritic टेक्सचर और aphanitic ताले कोन हबो व्हेन यू कैन नॉट सी अंडर नेकेड आई बा पॉकेट लेंस ए सब रे तुमे ग्रेन देखा जीवो नाही सो फास्ट हम देखिया phaneric टेक्सचर सो phaneric टेक्सचर थ्री तुमरो साइज अनुसार तुम तीन टाइप डिवीजन कर परिबो कोर्स ग्रेन मीडियम ग्रेन फाइन ग्रेन हां कर परिबो कोर्स ग्रेन मीडियम ग्रेन फाइन ग्रेन तो सेटा खाली मेंशन करिवो कि phaneric टेक्सचर कैन बी थ्री टाइप्स कोर्स ग्रेन मीडियम ग्रेन फाइन ग्रेन तापर इसको aphanitic टेक्सचर aphanitic टेक्सचर तो थ्री की ग्रेन्स can be seen only under microscope so grains can be seen under microscope so कि ग्रेन तुम्हें ना खाली आँख रे देख परिबो ना नेकेड आई रे देख परिबो so you will use a microscope to see the grain so these aphanitic texture it can be of four types the microcrystalline merocrystalline cryptocrystalline and glass so the microcrystalline कथा हम कहउछंती ताले microcrystalline merocrystalline cryptocrystalline all in all case grain can be seen under microscope only you cannot see under your naked eye तो जदि कोनोसी रॉक रे तुमे कोर्स ग्रेन पाउछो बा फाइन ग्रेन पाउछो तटा कहा पर डिपेंड करछि तार कूलिंग कंडीशन पर डिपेंड करछि जोटा जो जगह रे तुमे फाइन ग्रेन रॉक पाउछो सेटा अंडरगन रैपिड कूलिंग जोटी तुम क्रिस्टलाइज ग्रेन सब पाउछ बा कोर्सर ग्रेन पाउछ सेटा स्लो कूलिंग कंडीशन तो से को तुमको इंटीग्रेट करके लिखिया पड़िबो कि व्हाट इज द कॉज ऑफ की कोर्स ग्रेन व्हाट इज द कॉज ऑफ फाइन ग्रेन दैट इज जोड़ा में प्रीवियस क्लास से पढ़थले कूलिंग ऊपर डिपेंड करे यदि रैपिड कूलिंग हबो ताले फाइन ग्रेन हबो यदि स्लो कूलिंग हबो ताले कोर्स ग्रेन हबो सो माइक्रोक्रिस्टलाइन मेरो क्रिप्टो एगुरा सब फाइन ग्रेन तो एटा रैपिड कूलिंग रे प्रोड्यूस होची सो माइक्रोक्रिस्टलाइन रे तुमे ग्रेन कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप सो ए जगह रे तुमे कोन यू कैन आइडेंटिफाई इंडिविजुअल ग्रेन मैं इंडिविजुअल ग्रेन को आइडेंटिफाई करि पारे सपोज आम एमती बुझा कि तुम्हें माइक्रोस्कोप रे एक जिन सब देखी पार्छ ठीक अच्छे माइक्रोस्कोप रे तुमको धर ये बड़ बड़ माइक्रोस्कोप रे देखा तुम भाव जे जिनसा आम माइक्रोस्कोप डायग्राम माइक्रोस्कोप कर सो आम ये कौन इंडिविजुअल ग्रेन गुरा को डिस्टिंग्विश कर
माइक्रोस्कोप रे ग्रेन देखि परछन ता साथे इंडिविजुअल ग्रेन को डिस्टिंग्विश करि परियो सपोज एग्जांपल नियो तुमे कि चावल धरो चावल तुमे कोन करियो ईच ग्रेन को तुमे डिस्टिंग्विश करि परियो जदि सेठी तुमे अटा नबो ताल तुमको ईच ग्रेन को डिस्टिंग्विश करिया को डिफिकल्ट बुझला नहीं माइक्रोस्कोप रे तुमे सेही बडा थिंग को भाबो माइक्रोस्कोप रे से रॉक रो ग्रेन देखा जाउची बट यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल ग्रेन तुमे इंडिविजुअल ग्रेन को डिस्टिंग्विश करि परिबो नाही तो सेही बडा कंडीशन आसिले ताको कुआ जाय क्रिप्टोक्रिस्टलाइन यू ऑल केसेस रे तुमे ग्रेन सब जाक माइक्रोस्कोप अंडर ही देखाबो डिफरेंस कोन ताको भीतर सेडा हम देखछन so it cannot we cannot identify individual grain so individual grains can't be identified so individual grain जो राची तुम ताको आइडेंटिफाई एठी करि परिबो नाही so एया को हमें कहबा कौन कहबा क्रिप्टोक्रिस्टलाइन सो माइक्रोक्रिस्टलाइन क्रिप्टोक्रिस्टलाइन बोथ केस रे तुमे ग्रेन देखि परिबो अंडर माइक्रोस्कोप बट इन केस ऑफ माइक्रोक्रिस्टलाइन ग्रेन विल बी सीन एंड यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडिविजुअल ग्रेन्स बट इन केस ऑफ क्रिप्टोक्रिस्टलाइन grain can be seen but individual grain cannot be distinguished you cannot establish a boundary between grains then what will be merocrystalline it is intermediate between these two so partly you can identify individual grain partly you cannot so it is simple intermediate it is intermediate between micro and crypto then in glassy structure there will be no grain there will be no grain at all in glassy structure there will be no grain at all so these are different types of texture under granularity then we'll move to shape so shape it indicates the dimension of the grain it indicate the dimension of grains on the basis of development of grain ro shape ta kemiti develop heich ता अनुसार तुम तीन टाइप रे डिवीजन करि परिबो शेप को सो शेप कैन बी यूहेड्रल grain can be subhedral grain can be anhedral so grain रो जदी सब फेस पूरा वेल डेवलप्ड हिचंती सब फेस पूरा दी वेल डेवलप हिचंती ताल ताको कहै छै यूहेड्रल grain so in यूहेड्रल grains all the faces are well developed so फेस रा कोन छै वेल डेवलप्ड अछि यदि सबहेड्रल कहबा हमें गोटे फेस एमती आ गोटे फेस सपोज डेवलप करनी पार्टली डेवलप करछि सो सबहेड्रल कहले तोर पार्शियली डेवलप्ड फेसेस को कह परिबा पार्शियली डेवलप्ड फेसेस जो फेसेस और आछन दे आर पार्शियली डेवलप जदि अनाहेड्रल कहबा हमें ताल अनाहेड्रल केस है देयर विल बी नो फेस डेवलप हे नथिबा इन केस ऑफ अनाहेड्रल सो नो फेस सो शेप हमें एमती डिफाइन करि परिबा कि हाउ द फेसेस आर डेवलप्ड इन एन ग्रेन गोटे ग्रेन रे फेसेस रा केमती डेवलप हिचन वेदर दे आर वेल डेवलप्ड वेदर दे आर इल डेवलप्ड यदि well developed that it is euhedral यदि ill developed like कि anhedral no face तो anhedral बोली कहबो partially develop हेले subhedral बोली कहबो
इन अदर टर्म्स मोर ग्रोथ बा डेवलपमेंट जिते गोटे ग्रेन रोचे ताहले सी भी गोटे डिफरेंट शेप एक्वायर करिवो तो से अनुसार आम एमती शेप पाई परिबा जोटी ग्रेन पूरा सब जाक धर लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कौन थी समान थी ताको आम कहते इक्वी डायमेंशनल ग्रेन कौन इक्वी डायमेंशनल ग्रेन सो फेस वेल डेवलप्ड है एंड इट डेवलप्ड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन सब डायरेक्शन में इक्वल डेवलपमेंट है सो इक्वी डायमेंशनल ग्रेन यू कैन राइट डाउन कि ग्रेन विल डेवलप्ड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन if we consider another grain it will be called as columnar it will be called as columnar another we can consider here which will be called as tabular so in case of equidimensional grain will grain develop equally in all direction in case of columnar it is developed more in one direction than other two directions in this case it developed more in one dimension than other two dimension so it developed more in one dimension गोटे डायरेक्शन अधिक डेवलप होइछि सेति पे कोन होइछि ति लंबाली होइछि सेति पे एटा कोन प्रिज्म कोन प्रिज्म कहि परिबो बा कॉलमनार कहि परिबो सेमती टैबुलर और प्लेटी तुम कह पार जोटे कि इट हैज डेवलप्ड मोर इन टू डायरेक्शन दीटा डायरेक्शन अधिक होइछि देन अदर डायरेक्शन सो गोटे डायरेक्शन में ये अधिक ग्रोथ दीटा डायरेक्शन अधिक ग्रोथ ले तले टैबुलर हो देन वन डायरेक्शन अधिक ग्रोथ हो देन अदर टू डायरेक्शन इट विल प्रोड्यूस ए कॉलमनार एंड इफ इट विल मूव इट विल यू कैन से डेवलप इक्वली इन ऑल direction it will be equidimensional so these are three types of grain so in on the basis of shape we can define as euhedral subhedral anhedral euhedral all the faces are well developed subhedral partially developed anhedral no faces at all then on the basis of development we can divide it into three types equidimensional columnar tabular so equidimensional is developed equally in all direction columnar developed more in one direction than other two direction and tabular it is developed more in two direction than one direction so this is about your shape then comes to fabric so it defines the mutual relationship fabric defines the mutual relationship among grains so you can say the pattern of grains fabric means pattern of grain within a rock how the grains are distributed within a rock that will be defined as a fabric so on the basis of fabric we can define we can divide the igneous texture into two types one is your equigranular texture another is your uniquigranular texture one is your equigranular texture another is your uniquigranular texture so equigranular we can understand what will be equigranular so equigranular texture means the rock consists of all equal sized grain the rock consists of all equal shape sized grain rock consists of all equal shaped grain यदि रॉक रो सब जगह इक्वल शेप्ड ग्रेन रहला ताल ताको कोआ जीवा
equigranular texture. So equigranular texture, it can be classified into following types. It will be allotriomorphic, गोटे कहते हाइपिडियोमॉर्फिक, allotriomorphic, hypidiomorphic, phaneritic. So these are three types of equigranular texture: allotriomorphic, hypidiomorphic, phaneritic. So आम कहले जो भी equigranular texture हो, they all will consist of single shape grain. ता भितर कौन गोटे shape रो grain जो मिलू. So allotriomorphic, A for anhedral मन रखियो. So if a rock consists of all anhedral grains, then it will be called as allotriomorphic texture. So in allotriomorphic texture, the rock consists of all anhedral grain. So in allotriomorphic, it is all anhedral. I will only write down the example. Example is your appellate. It consists of all anhedral grains. For example, लिखिबा appellate. The appellates, APLAT. Then hypidiomorphic. So hypidiomorphic, it consists of all subhedral grain. What amra? Hypidiomorphic, it consists of all subhedral grain. Example you can take granite. Granite को. तो जदि allotriomorphic है anhedral, hypidiomorphic है subhedral, then phaneritic will be consist of all euhedral grain. So phaneritic, it consists of all euhedral grain. Example is your lamprey fire. These are rock. Example of lamprey fire. So if the rock consists of all equal size grain, it will be allotriomorphic, or hypidiomorphic, or phaneritic. So allotriomorphic consists of all anhedral grain, then hypidiomorphic consists of all euhedral grain, all subhedral grains, then phaneritic consists of all euhedral grains. This is your equigranular texture. Then comes to inequigranular texture. Inequigranular texture. So what will be inequigranular texture? So inequigranular texture is your rock consists of different shape of grain, different shape and size of grain. With the different shape or size of grain पाइबो, ताले सेटा हबा inequigranular texture. So inequigranular texture है तुम्हें you can write down two types of texture. One is your porphyritic texture. Second one is your poikilitic texture. What am I लिखिबा? Porphyritic texture. Another one is your poikilitic texture. So what is a porphyritic texture? First time लिखिबा porphyritic texture. So the porphyritic texture, larger grains are surrounded by
by smaller grains যদি rock রে তুমি larger grain পাউছ smaller grain পাউছ সো এটা ଆଉ ইকুইগ্রানুলার হেলানি ইনইকুই ହେଇଗଲା कि different size ର তুমি grain পাইଲ যদি সেইভলা condition থিବ and they arranged like कि the smaller grains will surround the larger one or you can say the larger grain are surrounded by smaller grains যদি আমরা rock করছন এটি তো এটি these are larger grains দেখো larger grains suppose they are surrounded by these smaller grains. So in this case this is called as porphyritic texture. This is called as your porphyritic texture where larger grains are surrounded by smaller grains. Larger grains are surrounded by smaller grains. So those larger grains are called as phenocryst. Larger grain को कौन जाए phenocryst. Phenocryst. And the smaller grain are called as ground mass. So larger grains are called as phenocryst and the smaller one is called as your ground mass. So porphyritic texture it is produced by two stages of cooling you can say two stages of cooling can it तुम्हें दीटा टाइप रा ग्रेन पाउछ गोटे सिंगल रॉक रे तुम्हें कोर्सर भी पाउछ फाइनर भी पाउछ तो एटा को तुम्हें बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन कहि परियो हां बरो बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन दीटा टाइप रा दीटा साइज रा ग्रेन में पाउछ से पे बाइमोडल कहि परियो जो बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन है इट इंडिकेटिंग टू स्टेजेस ऑफ कूलिंग ड्यू टू कोर्सर ग्रेन जो टाइम रे हितो दैट विल बी स्लो कूलिंग और फाइनर ग्रेन हितो एतले सेतले रैपिड कूलिंग हितो सो इट शो टू स्टेजेस ऑफ कूलिंग फास्ट कोइ हितो फास्ट हितो स्लो कूलिंग एतले कोर्सर ग्रेन प्रोड्यूस हिच देन सेकंड हितो रैपिड कूलिंग जो थे फाइनर ग्रेन प्रोड्यूस होती सो रैपिड कूलिंग फाइनर ग्रेन प्रोड्यूस कला स्लो कूलिंग कोर्सर ग्रेन प्रोड्यूस कला एंड मोर ग्रेन्स आर सराउंडेड कोर्सर ग्रेन्स आर सराउंडेड बाय फाइनर ग्रेन्स सो दिस इज कॉल्ड एज योर porphyritic texture. So there are three types of porphyritic texture on the basis of you can say the ground mass size you can say one we called felsophiric so felsophiric it is a porphyritic texture it is a porphyritic texture where the ground mass it is cryptocrystalline matter. Porphyritic texture it is a type of porphyritic texture where the ground mass you can write down it is a type of porphyritic texture where the ground mass is cryptocrystalline. Cryptocrystalline it is a type of aphanitic texture. So ground mass यदि cryptocrystalline metal थी cryptocrystalline means कि तुम्हें you can see it under microscope but individual grain cannot be distinguished. तो cryptocrystalline भी बड़ा ही परिवे ताठु भी बड़ा ही परिवे तुम खाली एकरे भी देखि परिवे porphyritic texture कोर्सर ग्रेन रा बहुत बड़ा होइतिबे ताठु छोटो फाइनर ग्रेन होइतिबे बुझि पारे सेटा तुम भी देखि परिवे ग्रेन रे जदि ग्राउंड मास टा cryptocrystalline हे गेला ताले सेटल ताको porphyritic न कहि कि felsophiric बोली कहै स्पेसिफिकली. So felsophiric it is a type of porphyritic texture that indicate करछि the ground mass is glassy ground mass is cryptocrystalline. Then I saw vitrophoric it is a type of you can say porphyritic texture where the ground mass is glassy यदि ग्राउंड मास तुमर ग्लास रहिला ताले सेटा अब विट्रोफाइरिक जदि ग्राउंड मास रहिला क्रिप्टोक्रिस्टलाइन मटेरियल ताले ता कुआ जिवो फेल्सोफाइरिक.
इन सम कंडीशन तुम्हारा जो फेनोक्रिस्ट पूरा था है द फेनोक्रिस्ट दे गैदर्ड एट वन स्पॉट, they gathered at one spot. So in this condition it is called as your glomeroporphyritic texture. Glomeroporphyritic texture. So what is glomeroporphyritic texture? It is a type of texture where the you can say the phenocryst they gathered at one spot. So here the phenocryst gathered at one spot. If the phenocryst will be gathering at one spot in a porphyritic texture, then it is called as your glomeroporphyritic. So in glomeroporphyritic, vitrophyric, feldspathric, all are come under porphyritic texture. So porphyritic texture which pehla coastal grains are surrounded by finer grain. Coastal grain are surrounded by finer grain. तुम एग्जांपल नहीं परिबो का इक्विग्रानुलर टेक्सचर जोड़ा हमरा रहउछ इक्विग्रानुलर टेक्सचर कोटा हो जोड़ा तुमे सब सेम साइज रो इनइक्विलाइन रे डिफरेंट साइज बस तो यदि खाली भात खाइबो खाली राइस खाइ चलो बिरयानी राइस को जो राइस को खाउ राइस टा होछ सब इक्वल साइज तब चिकन बिरयानी एडू पड़े छै ताले कोन हो लार्जर ग्रेन्स ये चिकन तो लार्जर ग्रेन होची चिकन हो अंडा हो एगुरा सब पड़े सो चिकन इज द लार्जर ग्रेन इट इज सराउंडेड बाय स्मॉल ग्रेन राइस तो चिकन बिरयानी इज एग्जांपल ऑफ परफेक्ट टेक्सचर लिखिबन चिकन बिरयानी बोली वो ग्रेनाइट देखाय परफेक्ट टेक्सचर परफेक्टिक ग्रेनाइट अछि ता से तुमे सपोज रखी हम भाबो पूरा गोटे जगह पूरा कादो हेची तापर तुमे पत्थर पकेबो तो सेटा हबो को विट्रोफाइट तो से जगह तुम कौन कर ग्राउंड मासटा पूरा ग्लासी हो गला तुम जो पत्थर पकड़े से कोर्सर के तो कादुओ कौन पत्थर को सराउंड कर रही तो से टाइप हो कौन विट्रोफाइरिक जदि गोटे जगह गैदर होते ग्लोमेरोपर्फिरिटिक सेटा तुम पर्फिरिटिक टेक्सचर इट इज वेरी इंपोर्टेंट टेक्सचर बहुत टाइम रे एग्जाम रे पड़ो तुम तो यहाँ केमी प्रोड्यूस हुए इट इज प्रोड्यूस बाय टू स्टेजेस ऑफ कूलिंग फास्ट हम स्लो कूलिंग जो प्रोड्यूस हम कोस्टल ग्रेन तापर हम फाइनल ग्रेन बाय रैपिड कूलिंग तापर आसो पोइक्लिटिक टेक्सचर so poikitic texture it is a type of texture where the smaller grains are surrounded by larger grains. Smaller grains are surrounded by larger grain. तारा उल्टा होची कौन पर्फेरिटिक रे कौन था स्मॉल ग्रेन गुरा सराउंड होतला कौन स्मॉल ग्रेन गुरा सराउंड करथले लार्जर ग्रेन को एठी लार्जर ग्रेन गुरा सराउंड करिवे स्मॉलर ग्रेन को इट विल लुक लाइक दिस और एटा होती गोटे लार्जर ग्रेन रे ता भीतर एमती सब स्मॉलर ग्रेन थी थिंग होचे एबा तो एटा कहती कौन दीज स्मॉलर ग्रेन आर सराउंडेड बाय लार्जर ग्रेन by you can say the smaller grain are within the larger grain the smaller grains are within the larger grain सेतपे ताको कहै जे small grain तुम्हारा larger grain will surround the smaller grain or smaller grains are surrounded by larger grains so smaller grains are surrounded by larger grains or you can say those smaller grain are within larger grain so it can be produced by two stages of cooling eta भी तुम्हारा दीटा stage of cooling रे produce हुए first तुम्हारा rapid cooling तापरे slow cooling but that is not the perfect cause लिखि परिबो कारण एटा two stages of cooling रे हुए नहले एटा normally growth time रे produce हुए एतो गोटे
कोर्स ग्रेन ग्रोथ करथाय इट विल इंक्लूड द फाइनर ग्रेन धर ये तुम फाइनल ग्रेन अच्छी ये ग्रेन टा ग्रो कर भितर फाइनल गुरा रही तो सही टाइप हुए सो पोइक्लिटिक अंडर गोटे टेक्सचर आसे कहते ओफिटिक टेक्सचर ओफिटिक टेक्सचर so ophitic texture it is a special type of texture that occur between plagioclase and pyroxene so in ophitic texture euhedral plagioclase are surrounded by anhedral augite. So euhedral plagioclase are surrounded by anhedral augite. So euhedral plagioclase it will be small grain euhedral ta ko smaller grain habo surrounded by anhedral plagioclase ta habo larger grain हला बा तुमे एडी plagioclase रेखा हो एटी ऑगाइट बा क्लाइनोपैरेक्सिन ऑगाइट होछ कोन इट इज अ क्लाइनोपैरेक्सिन सो हमें तो को एमती एक्सप्रेस कर परयो तमे कि सपोज दीज आर euhedral plagioclase they are surrounded by anhedral augite like this so these are you can say plagioclase these are augite और एग्जांपल लिख पारो डोलेराइट देखा एटा तापर नेक्स्ट जीवा हमें सबओफिटिक टेक्सचर so subophitic texture so it is also between euhedral plagioclase and a clinopyroxene but in this case the enclosure by augite it is partial so here you can say augite partially encloses plagioclase augite partially encloses plagioclase so ophitic एवं poikitic अंडर तुम्हें बीम बही जो पढ़ो कि अदर कौन से टाइप बुक रे किछरा अदर टेक्सचर देछि बट सेटा एते इंपोर्टेंट ophitic टेक्सचर होछि बहुत इंपोर्टेंट बहुत टाइम रे तुम क्वेश्चन पड़े क्वेश्चन plagioclase augite पढ़िथिबो नहले plagioclase clinopyroxene पढ़िजिवो कि plagioclase रा कोनोसी मिनरल देई कि clinopyroxene गोटे मिनरल देइथो तो से अंश तुमको जानिया पड़ो plagioclase और clinopyroxene भितर जदी होछि ताले इट विल बी ophitic टेक्सचर सो बुझ पाइला।